Hello children, this video is for class 4 subject English literature. Chapter 9 and the topic of the poem is crossing the road. Students, I wish you all are well aware about safety rules. Safety rules are necessary for our safety, health and happiness. We should always follow some safety rules. Let us talk about them. Now see, it is a traffic light. It's a traffic light. Red light says stop. Red light says stop. Yellow light says wait. And green light says go. Now let's recite a poem. Dear children, when you cross the road, be careful where you go. For scooters, buses, cars and vans are racing to and fro. To and fro means backwards and forwards. पीछे और आगे. Backwards means पीछे and forwards means आगे. It means, dear children, we should be careful while crossing the road. Where there is no zebra crossing, we should look left and right before crossing the road. Scooters, buses, cars and vans move on the road, so always be alert on the road. बच्चों, जब हमें सड़क पार करना होता है तो हमें ध्यानपूर्वक सड़क पार करना चाहिए और ध्यानपूर्वक सड़क पर चलना चाहिए। यदि ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बना है, यदि रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तब हमें रोड पार करते समय, सड़क पार करते समय अपने दाहिने और बाएं साइड देख लेना चाहिए, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे साधन, बहुत सारे व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, बसेस, कार्स, वैन्स, ये सारे चलते रहते हैं। तो इसीलिए हमें रोड क्रॉस करते समय अलर्ट रहना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। Look for the zebra crossing marked in white across the street. If you just walk between these lines, no accident you will meet. Students, zebra crossing means it is a place on the road that is marked with alternate black and white, where traffic must slow down and people can cross. रोड पर हम देख सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग ब्लैक एंड वाइट कलर से, अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट कलर से मार्क किया रहता है, जहाँ पर ट्रैफिक जो होती है वो धीरे हो जाती है और जो पैदल चलने वाले होते हैं पेडेस्ट्रियंस, वे रोड को क्रॉस कर सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। So we should always cross the road at the zebra crossing and walk on the footpath. If we walk on the footpath, we will not meet with an accident and chances of getting accident are reduced. हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलकर रोड क्रॉस करना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए अगर हम पैदल रहते हैं तो। और यदि हम फुटपाथ पर चलते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। When traffic lights are showing red, they are asking you to wait. Oh, do not cross the road just now, even though you may be late. Traffic means people and vehicles moving backwards and forwards. Traffic jam जिसे हम कहते हैं, लोग या vehicles means साधन like scooters, bus, cars, ये सभी चीज़ें जब चलते हैं सड़क पे, आगे पीछे लोग चलते रहते हैं, तो वही ट्रैफिक उसे ही कहते हैं। When traffic lights are showing red, they are asking you to wait. Oh, do not cross the road just now, even though you may be late. Students, red light says stop. It means if the traffic lights are showing red, we should not cross the road. Even if we are late, we should wait for the green light.
रेड लाइट हमें क्या बताता है? रुकने के लिए कहता है। रेड लाइट रुकने को कहता है, स्टॉप। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, वो हमें रुकने को कहता है। जब हम ट्रैफिक लाइट्स में देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पर अगर रेड बत्ती जलती है तो इट मीन्स हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए, हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम भले ही कितनी भी देर हो जाए, लेकिन हमें जब तक कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। And when the red eye turns to green, it is telling you to cross. For now the cars will wait for you, just as if you are the boss. Here boss means the master, leader. We will cross the road when we see the red light or when the red light turns to green. We will cross the road when we see the green light, not a red light. We will cross the road when we see the green light or when the red light turns to green. This time we are the boss. And other vehicles people will wait for us. जब लाल बत्ती ग्रीन हो जाती है, हरी बत्ती जलने लगती है, तो उस टाइम पे हम चल सकते हैं, उस टाइम पे हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। जब ग्रीन बत्ती रहती है तब सड़क के मालिक कौन होते हैं? रोड पे जो लोग पेडेस्ट्रियन होते हैं वे चल सकते। इट मीन्स उस टाइम पे हम लोग बॉस हैं, और उस टाइम पे जो साधन से लोग हैं, कार, बस, स्कूटर, ये लोग हम लोग का वेट करेंगे। जब तक कि हम लोग क्रॉस नहीं कर लेंगे तब तक वो हम लोग का वेट कर सकते हैं। Now whether you are 4 or 5 or 6 or 7 or 8, remember what the red light says: wait, wait, wait. It does not matter whether the people are large in number or less in number on the road. If the traffic light shows red, we should only wait till the red light turns to green. We should always follow the traffic lights. सड़क पर चलते समय ये मैटर नहीं करता है कितने अधिक से अधिक संख्या में लोग चल रहे हैं या कम है, ठीक है। अगर लाल बत्ती जल गई है तो इट मीन्स हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए, हमें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए, हमेशा ट्रैफिक रूल्स का अनुसरण करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। क्लियर? लेट्स सी सम डिफिकल्ट वर्ड्स। केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल, सावधानी पूर्वक। स्कूटर्स, SCOOTERS, स्कूटर्स। बैकवर्ड्स, BACKWARDS, बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड्स, FORWARDS, फॉरवर्ड्स। जेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA, जेब्रा, CROSSING, क्रॉसिंग। एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। दो, THOUGH, दो, दो, THOUGH, दो। WHETHER, weather, WHETHER, weather। Remember, REMEMBER, remember। Vehicles, 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 means साधन। Now let's do some word meanings and their use in sentences. So first is to and fro, means backwards and forwards. It is very hard work indeed going to and fro. It is very hard work indeed going to and fro. Traffic means people and vehicles moving backwards and forwards. People and vehicles moving backwards and forwards. I don't like to ride my bicycle in heavy traffic. I don't like to ride my bicycle in heavy traffic. Boss means leader. The boss looked at me.
zebra crossing. Means a part of the road marked across with white lines where traffic must slow down and people can cross. We should always cross the road at the zebra crossing. We should always cross the road at the zebra crossing. Answer the following questions. Why should we be careful while crossing the road? Why should we be careful while crossing the road? Answer. We should be careful while crossing the road so that there is no chance of getting accident. Next, how can you avoid an accident? How can you avoid an accident? We should walk on the footpath, and if there is no zebra crossing, we should look left and right while crossing the road. How can you avoid an accident? We should walk on the footpath, and if there is no zebra crossing, we should look left and right while crossing the road. What does the red light tell you? What does the red light tell you? The red light tells us to stop and wait. The red light tells us to stop and wait. Write the names of 3 lights. The names of 3 lights are red, yellow and green. Why should you cross when the red light turns green? Why should you cross when the red light turns green? We should cross the road when the red light turns green because green light indicates us to go ahead or move forward. We should cross the road when the red light turns green because green light indicates us to go ahead or move forward. And the last is, can you name any 2 vehicles that are also seen on the road and are not mentioned in the poem? Can you name 2 vehicles that are also seen on the road and are not mentioned in the poem? Students, you have to answer this question. इस question का answer आपको करना है. Question is, can you name any 2 vehicles that are also seen on the road and are not mentioned in the poem? आपको किन्हीं ऐसे 2 व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो रोड पर चलते हैं लेकिन उनका जिक्र इस पोयम में नहीं किया गया है. इस पोयम में उनको मेंशन नहीं किया गया है. Choose the correct option. Zebra crossing named on which animal name? Horse, zebra and lion. Which light says for stop or wait? Green, yellow, red. Which light says you to cross the road? Green, yellow, red. Write whether these statements are true or false. Write whether these statements are true or false. First sentence is, zebras are drawn at the zebra crossing. Zebras are drawn at the zebra crossing. The red light always tells you to stop and wait. These lights are called traffic lights. Traffic lights are only meant for grown-ups to follow. Even if you are getting late, do not cross the road if the red light is on. Even if you are getting late, do not cross the road if the red light is on. Next is, write any 2 words not from the poem that rhyme with. Students, you have to write rhyming words but should not from the poem. जो भी आप राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे वो पोएम से नहीं होना चाहिए. ओके. फर्स्ट इज रोड, रेड,
street, late, 5. तो रोड का राइमिंग वर्ड्स आप जो 2 लिखेंगे वो पोएम के अंदर से नहीं होना चाहिए. लाइक रोड, load, code. So like this you have to write rhyming words. Write the antonyms of the given words. Antonyms means विलोम शब्द, उल्टा आपको लिखना है. Antonyms careful, white, now, go and late. So careful का careless. So like this you have to write antonyms of the given words. Write the plurals of the given words. Plurals child, road, bus, line and light.